Can we change to panelists only view so we don't have participants view? Is that? I've changed it to speaker view. Thank you. Start the session now. Hello, everyone. Assalamu alaikum. It's good to see you all from around the world. This is APS Europe, the Association for Pakistani Medical Professionals in Europe. We established ourselves in December of 2020, which is very recent, but we have done remarkably well in this time. Our mission is to bring Pakistani health professionals on one platform to advance healthcare in Pakistan and overseas. The founding president of APS Europe, Dr. Abdul Rahman Shahid, is here with us today. He visited Pakistan in February this year and met with President of Pakistan, the Health Minister, the Health Secretary, Governor of Punjab, and other key government officials to lay foundations for collaborative work APS Europe is doing in Pakistan. We have co-piloted a first aid and trauma care project at PIMS. We are in close working relation with PMC and have regular meetings with PMC President Dr. Taki. Some of the achievements include recognition of German and Irish specialist training by PMC, and work is ongoing for other European countries training recognition. APS Europe is delighted to have you here and welcome you all to join hands with us. My name is Shaista Meraj and I'm the Director General of APS Europe. I work as a radiologist in United Kingdom. So let's begin our eagerly awaited session on working in Europe as a medical professional. We're very keen to hear the experiences of our esteemed colleagues working and living in Europe. But before that, isn't it wonderful to know that so many Pakistani professionals are working across Europe and they're here to guide us and inspire us? Secondly, European continent has vast opportunities which are largely untapped. So let's begin. In this session today, my co-host is Dr. Saeed Ali Raza. Dr. Saeed Ali Raza is also the Director of Education and Training for APS Europe, and he is an oncologist working in United Kingdom. So thank you to all our viewers for being with us. I'm going to invite Dr. Ali Raza to say a few words about what we are looking for being in Pakistan, what kind of information we need if we are thinking of working in Europe, and what are our expectations and possible fears and uncertainties. Thank you very much, Shaista, for a wonderful start and giving us this opportunity to share our experience with our fellow colleagues in Pakistan. I have recently moved to the UK, so I'm aware of the problems our doctors have to face there and how we are there can facilitate them. I would definitely like to say that our Pakistani doctors are performing amazingly all over the world. They can survive in every kind of system. And APS Europe is here to provide them opportunity to explore more, to mend their skills, and to look for new opportunities all over the world. Currently, the scenario has changed a lot in Pakistan, and most of the doctors
are going for specializations, either local or foreign ones. And we are here to guide them about the licensing processes of different countries, and we will facilitate them from their education point of view to their job hunt, and then establishing them in these countries. Thank you very much. Thank you so much for setting the scene. I'm going to now invite Dr. Arshad Sultan. Dr. Arshad Sultan is a pediatrician based in Norway. Over to you. Thank you for being with us. I know you're on call. Okay. Yeah, you come. Okay. Assalamualaikum everybody. तो मैं बेसिकली कॉल पे बैठा हूँ, इसलिए बीच में मेरी फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं. डॉक्टर अर्शद सुल्तान मेरा नाम है. नॉर्वे में एज अ कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन मैं काम कर रहा हूँ. मुझे यहाँ काम करते हुए तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया है. मेरे आने की मेन मोटिवेशन जो है वो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे थे, मेरे पास नॉर्वेजियन नेशनलिटी थी, इसी यहाँ में मूव करके आ गया. तो यहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू यूके या अमेरिका, क्योंकि मेन जो बैरियर है वो यहाँ पे लैंग्वेज होती है. आपको फर्दर आगे जाने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज से सीखनी पड़ती है, जिसमें आपका तकरीबन 1 ईयर का टाइम जब लग जाता है. इसके बाद जो यहाँ की जो जितनी मेडिसिन है सारी लोकल नॉर्वेजियन लैंग्वेज में है. हमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी सीखनी पड़ती है. इसके बाद इसका पर एलिजिबल आप हो जाते हैं कि अब यहाँ का प्लैब या एग्ज़ाम दे सकते हैं. वो इतना खैर मुश्किल नहीं होता, प्लैब की तरह कहीं वो होता है. वो पास कर लेने के बाद आप ये यहाँ के हाउस जॉब में आते हैं. तो चाहे आप अपने मुल्क से कंसल्टेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा. इवन आप यहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट भी आए हैं तो भी यहाँ पे हाउस जॉब को करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो सोशल सिस्टम है वो दुनिया से क्वाइट डिफरेंट है. इस वजह से करके यहाँ पे चीज़ें हमें शुरू से वो करनी पड़ती हैं. लेकिन जब हाउस जॉब आप कर लेते हैं फिर यहाँ पे जॉब्स के पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू यूके. कोई ज़्यादा यहाँ पे कह लें कि कंपटीशन नहीं है, आपको जॉब इजीली मिल जाती है, और जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है. तो मेन यहाँ का जो बैरियर होता है वो यहाँ पे लैंग्वेज होती है. यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो पाकिस्तानी डॉक्टर जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है. बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से मूव करके आए हैं, लेकिन जो अगली जनरेशन है उनमें से नए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं. क्योंकि हम पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे लफ्ज़ डेल है पाकिस्तानियों के लिए, कि यहाँ आप डॉक्टर हैं, यहाँ आप इंजीनियर हैं, या लॉयर हैं, या लूज़र हैं. तो मेजॉरिटी कोशिश ये होती है कि बच्चे हमारे यहाँ पे डॉक्टर ही बने. तो वैसे नॉर्वे रहने के लिहाज से बहुत खूबसूरत, बहुत ही पुरअमन कंट्री है. तो जो लोग आना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम. बल्कि आप तो ऑनलाइन भी आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है. वो कुछ लोग जो है पहले ऑनलाइन अपना लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं. उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बड़ा ईजी हो जाता है. जब लैंग्वेज पास कर लेते हैं फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों को जो लाइसेंस है वो प्लैब देने के बाद इजीली मिल जाता है. कुछ को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो जो लोग नॉर्वे आना चाहें, इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, मोस्ट वेलकम. मेरी ईमेल वगैरह अवेलेबल है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपडेट करने की. थैंक यू. नेक्स्ट डॉक्टर शास्ता मिराज. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. व्यूअर्स, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको मुतल्लिका मालूमात फराहम करें इस सेशन में. और आपको ये बताती चलूँ कि ये हमारा एक इनिशियल सेशन है एज अ टेस्टर, आपको बताने के लिए कि हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स यूरोप में हैं. तो हम आगे चल के मुख्तलिफ ममालिक पर अलहदा से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह. I'm now going to invite Dr. Irfan Majid Raja. He will talk to us now. He's a family and community medicine physician based in Spain, and he's also APS Europe Director of Public Health Awareness. Thank you. Thank you very much, Dr. Shaista Miraj. मैं क्विकली जाऊंगा, सिर्फ 2 टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा as early as I can. पहली जो है कि thank you very much for the rest of the team for your trust in me. मैं एज अ डायरेक्टर एप्स यूरोप जो है 2 चीज़ें ज़रूर करने जा रहा हूँ, और उनकी मैं अभी उन पर मेहनत भी कर रहा हूँ. एक जो पोस्टर एंड पम्फलेट प्रेजेंटेशन है, हमारे मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल डेज हैं फॉर एग्जांपल, उनकी अवेयरनेस पैदा करनी है, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तानी एंड उर्दू स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग, या जहाँ पे भी हम मौजूद हैं उन तमाम ज़बानों में हम वो करने जा रहे हैं. दूसरा, इस प्लेटफॉर्म को डिजिटलाइज फॉर्म में मैं इंशाल्लाह ताला लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल है कि जो हम लिख के या पीडीएफ फॉर्म में या लंबा बातें करके जो हम अट्रैक्ट उस तरह नहीं ऑडियंस कर सकते, जिस तरह हम वीडियो फॉर्म्स में उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं. ये तो होगी पहली बात. दूसरी बात, स्पेन में जो डॉक्टर्स पाकिस्तान से आना चाहिए उनके लिए मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा,
تو ہم نے پوری کوشش کی, پچھلے کووڈ نے بھی تقریباً 1.5 سال میں ہمیں بالکل ہی مفلوج کیے رکھا, لیکن ہمیں جو بڑے بریک تھرو ملے ہیں کہ وہ 2 راستے ہمیں پتہ چل گئے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز کو یہاں پہ ہاربر کرنے کے لیے. وہ اپروول بھی ہم نے لے لی ہے. پہلا تو وہی لینتھی ہے کہ اسپینش سیکھیں, کاتالان سیکھیں, اس کے لیے زبانیں آنی چاہیے, اور اسکولس میں جاتے جاتے سال لگ جاتا ہے, اور تقریباً 2 سال زبانوں پہ لگ جاتے ہیں. وہ ہم نے ابھی ختم کر دیا ہے بیریئر, کیونکہ جو ہی ہمارے آئیں گے, ہم پیسکا پلیٹ فارم سے جو ہم نے یہاں پہ بنایا ہے, وہاں سے ہم اسپینش اور کاتالان ڈے 1 سے اسٹارٹ کروا دیں گے, اور 6 منتھس میں ہم ان کو اسپینش اور 6 منتھس میں کاتالان دونوں زبانیں. یاد رکھیے اگر اسپین کا باقی کسی حصے میں ہے سوائے کترونیا کے, تو وہاں پہ صرف اسپینش. تو 6 مہینے میں ہمارے جو بچے آئیں گے, اسٹوڈنٹس آئیں گے, وہ ریڈی ہوں گے سسٹم میں جانے کے لیے. ساتھ ان کا ہم کی ویلیڈیٹی اپلائی کر دیتے ہیں, اور ماسٹرز اسٹارٹ کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو 2 سے 3 سال کا ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے, یہ ان کا ماسٹرز بھی مکمل ہو جائے گا, ان کی ویلیڈیٹی بھی آ جائے گی, اور وہ سسٹم میں آ جائیں گے. ان سالوں میں بجائے کہ یہ ضائع ہوں, وہ سسٹم میں آ جائیں. اور ایک اور بات میں کوئکلی جو ہے پیسکا کی طرف سے ہی, کہ پبلک ہیلتھ, ڈاکٹر شائستہ معراج آپ اویئر ہیں, آپ نے بھی وہ لسٹ بھیجی, اس پہ ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں. پوسٹرز, پمفلیٹس, آن لائن جو ویڈیوز اینڈ ویژول ہے, وہ میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ جو پیسکا کے جو ممبرز ہیں, میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ یو آر پیڈ اور ان پیڈ ممبر, میرے لیے ممبر ہونا ضروری ہے. صرف آپ ڈاکٹرز ہیں, آپ سب کی جو خدمات میں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ ود اٹس میٹر آف ناؤ فیو ڈیز کہ ہم پہلا جو ہے جو کلپ آپ کہہ لیں, جتنا مختصر سے مختصر ہو سکا پبلک اویئرنیس کے لیے, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیسکا کے پلیٹ فارم سے وہ سٹارٹ کر دیں گے. اینڈ دین انشاءاللہ سلولی اور پروگریسولی ہم موو آن کرتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. Dr. Sadaf Ikram will talk to us now. She's from Sweden and she's working in family medicine. Thank you. السلام علیکم and hello everyone. میرا نام صدف اکرام ہے اور میں سویڈن میں تقریباً 2005 سے رہ رہی ہوں. میں نے شائستہ جی کے ساتھ شیئر کر لی ہے وہ ویب سائٹ جس پہ ساری انفارمیشن ملے گی. I'll go there first that I would love to encourage all the people who want to move to another country, and if they decide to come to Sweden, they are mostly welcome to come and work here. Yahan pe job opportunities are really, really good. But the main barrier and in the beginning is actually your language, because in Sweden we do speak Swedish, and when you have learned your language, then actually it becomes your power. Because چونکہ میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ شروع میں ہوتے ہیں I didn't want to learn Swedish because I did feel like that it's a waste of time because I can medicine, but with time I learned that our profession does tell us that there is a very, very close contact with the patients, and when you're sick, you are in a very in such position that you can't you want the other person, and in our case is doctors, that we understand our patients and they understand us as well as, and it's as important. So یہاں پہ بالکل جو ارشد سلطان صاحب نے ذکر کیا, سویڈن بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو 2016 سے انہوں نے رولز چینج کر دیے کہ ایون اگر آپ اسپیشلسٹ بھی ہیں, اپنے ملک سے بن کے آئے, تو آپ کو ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا, اور وہ سویڈش لینگویج میں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اٹس دا بگیسٹ بیریئر جو لینگویج ہے. لیکن جب آتی ہے بات کہ اس کو بیریئر آپ نے سمجھنا ہے یا واقعی اپنے آپ نے اس کو ایسٹ سمجھنا ہے, تو یہ ہم پہ آ جاتا ہے تھوڑا سا, کیونکہ یس میں کہوں گی کہ سب انفارمیشن ہے آؤٹ دیئر, وہ انگلش میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیا کرنا ہے, اور اس میں وہ بالکل کوئی گھپلا نہیں کرتے. ایوری تھنگ از ریٹن دا وے اٹ از سپوز ٹو بی اینڈ یو آر سپوز ٹو ڈو اٹ. But again, language is the key to get into the system, and اس سسٹم میں رہنے کے لیے میں نے خود میں نے جو راستہ چوز کیا وہ اس طرح سا تھا کہ میں I chose my family life first, کیونکہ I'm married to a second generation پاکستانی جس کا بھی پروفیشن وہی ہے جو میرا ہے. We had 1 year in between us. وہ اور بات ہے کہ he became double specialist جب اتنی دیر تک, جب کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے کام کرنا ہے. تو میں پچھلے 10 سال سے سویڈن میں کام کر رہی ہوں ایز اے ڈاکٹر. I have the privilege to work اپنی ہاؤس جاب کی لائسنسنگ لی 2015 میں. Then I worked as مجھے انفیکشس میڈیسن بہت پسند ہے. I worked there like for 1.5 years.
फिर उसके बाद मैंने फैमिली मेडिसिन चूज़ किया, या जिसको जीपी कहते हैं, वो 100% जॉब है यहाँ पर। 5 साल की स्पेशलाइजेशन है। मैंने इसी दौरान 2 साल पहले पाकिस्तान जाके पीडियाट्रिक्स में काम किया, जिसके अंदर मेरा फोकस था कि मैंने जाके जो सबब जो हैं गाँव वगैरह के एरियाज़ हैं, उस पे जाके मैंने उनको सिखाना है कि यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, वो बहुत एडवांस है। आई वांटेड टू इम्प्लिकेट द सेम इन पाकिस्तान एज़ वेल, ताकि हेल्थ केयर, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, मुझे नहीं पता ये उर्दू का वर्ड है, बट दे आर कॉमन टू एवरीबॉडी। अभी लेटली हमें अल्लाह ने तीसरा बच्चा दिया है, और मैं उनके साथ इस वक्त घर पे हूँ। तो अपनी पेरेंटल लीव पे जाने से पहले आई वर्कड एज अ रीजनल लेवल पे। मैंने कोविड के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया विद द पॉलिटिशियंस एंड मेकिंग ऑल द जो रिक्लीनियर अब मेरे जहन में आ रहा है, वो मैंने किया है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली द मेन हिंड्रेंस इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन द लैंग्वेज। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, पेनफुल है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने ज़बान अच्छे से सीख ली, देन सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सदफ। ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑब्वियसली हर जगह पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी ज़बान वहाँ बोली जाती है, लेकिन इट टेक्स सम टाइम, बट विद डेडिकेशन यू कैन गेट इट। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर सादिया सईद फ्रांस से। उन्होंने पीएचडी की है ह्यूमन जेनेटिक्स में, और वो हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू। सादिया, आप अनम्यूट करें। Okay, can you hear me? Great, yes, thank you. Okay, hello everyone, Assalamu alaikum. Thank you, APS Europe, for inviting me to share some of my experiences. So, Sorry, Sadia, I'm sorry, जरा थोड़ा ऊंचा अगर बोलें तो थोड़ी सहूलत हो जाएगी सबको. Thank you. Okay. My name is Sadia Saeed, and I am currently a research scientist in CNRS University of Lille and Imperial College London. To be a scientist was my passion. So after completing my MSc in zoology from Government College University, I joined a Center of Excellence in Molecular Biology, and I did my MPhil in Molecular Biology there. I had a great desire to get my PhD from one of the internationally renowned universities. So I started looking for scholarships to support my PhD. But soon I realized that it will not be an easy task to get scholarship or funding that support my PhD fully. So then I chose a different route. I got an opportunity to get research training from University of Cambridge in metabolic research laboratories. And at that place, I got the opportunity to make some publications in high impact journals. And after this training and publications, I was awarded a scholarship in Imperial College London to pursue my PhD. So my project for my PhD was related to genetics of obesity, and I opted to work on genetic investigation of severely obese children from Pakistan. So my PhD work started not from data analysis, but to go to Pakistan to get ethical approvals, to recruit samples, make field villages, and then do systematic genetic analysis. It was quite tough. I have to face lots of challenges and hardships, but at the same time, I enjoyed my work a lot. I was given full liberty to plan my experiments, to do my work, and I didn't want any micro supervision, so it was not provided to me. So it was an excellent experience for me. So since my PhD went successful, I was offered a postdoctoral position in University of Lille, France. It was a big decision for me to, and I opted for this just to excel in my career. So coming from Pakistan to UK was no doubt a cultural challenge, but from UK to France was a much bigger challenge for me. And as you can see, the major challenge was the language. When I was in UK, people, they used to say me, oh, it's not a problem. So once you will be with the French people, you will automatically start speaking French. But to be honest with you, it didn't happen. I waited for 1 year, and this first 1 year was very tough for me. It was depressing as well.
but then I opted for evening classes offered by University of Lille to international researchers like me. So and then I know I can at least speak in French, talk in French, and I have participated in some conferences in French as well. So after my successful postdoctoral work here, I was awarded a big funding from Research Council in National Genomics of Metabolic Disorders, mainly in obesity. So it is a joint venture between a University of Cambridge, the same lab where I got my research training, Imperial College London, where I did my PhD, and University of Lille, where I did my postdoc. And all things is we are doing in collaboration with the research labs and hospitals in Pakistan. So for the international researchers in France and who wants to pursue their research, life is quite exciting here. The research labs are state of the art. And if you want to pursue your passion as a researcher, it's a good place for you. More importantly, because here in France, the labs are not as cosmopolitan or international as in UK. So they want to be international labs. So if someone apply from our country, like in Pakistan, they really encourage us to come and join them, and they facilitate us to become the permanent member of the lab. So yeah, this is my journey. Maybe in next few other talks, I will explain more about my work and what I'm doing and how we can help the children in Pakistan for their treatment in future, maybe in cooperation with APPS Europe. And the only thing I advise to the people who want to come to France that please do not like me, first get the language course and then come here. So life will be beautiful here then. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, कितना अच्छा लगा जान के फ्रांस में आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. सो इट्स ग्रेट. इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे हर कंट्री पे. आप डॉक्टर अली रजा बाकी का स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे. थैंक यू वेरी मच शाइस्ता. सो अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है that language courses are the most important thing and they are the hindrance and people are asking questions about them from us on the Facebook. So एंड में क्वेश्चन है Q&A सेशन में हम इस चीज़ को देखेंगे कि हम कैसे उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जैसे सादिया सईद ने भी हाईलाइट किया. सो नेक्स्ट स्पीकर वी हैव इज सादिया हनीफ. शी इज अ न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ड इन द UK and she will share with us her experience. Assalamu alaikum. Thank you very much for giving me this opportunity to talk about my personal experience, as well as I will just highlight what opportunities are available at different level for young doctors or middle grade or the senior doctors. I had opportunity to work in 3 different systems. I have worked in Pakistan, in Middle East, and as well as in the Europe. Of course, all the systems, they have their plus and minus points, and you need to see. पाकिस्तान में we struggle. अगर आप FCPS कर लेते हैं, उसके बाद भी आप सीनियर लेवल पे आपका जो पहली पोस्ट आपको मिलती है वो सीनियर रजिस्ट्रार है, और आगे के काफ़ी ज़्यादा टफ years आपको you're in the line, you're in the queue to go to that seniority level to get a consultant post. यहाँ पे हर तरीके से what I say is जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे जो कलीग्स हैं जो मूव किए हैं सऊदी से या पाकिस्तान से आए हैं, I have seen them going a step ahead rather than just regretting के कोई opportunity नहीं मिली. अगर आप junior level पे हैं, that is the best way to enter into the system. आप लैब करिए इनिशियली, अब हाउस जॉब के बाद यहाँ पे जब आप आते हैं तो फिर आपको 2 साल की फाउंडेशन ईयर करना होता है, उसके बाद 2 साल 4 लेवल की मेडिकल ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद यू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग पोस्ट, जो कि हर मुल्क की तरह 5 to 6 years की ट्रेनिंग होती है, एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू गो थ्रू, जिसके लिए आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट वी हैव टू, बट द एंड रिजल्ट और द फ्रूट इज रियली स्वीट इफ यू बिकम अ कंसल्टेंट. अगर आप मिडिल ग्रेड के लेवल पर आते हैं, एज इन माय केस आई विल शेयर, मैं काफ़ी सीनियर लेवल पे आई थी. द टाइम व्हेन आई मूव्ड टू UK, आई ऑलरेडी हैड डुअल एक्रीडिटेशन इन मेडिसिन एंड neurology from FCPS, from College of Physicians and Surgeons. I came to UK in a middle grade post. लेकिन यहाँ पे it does not mean, it all depends that what you want. If you want to stay on a middle grade post, जो कि एक service post है, you can stay and you can
carry on rest of your life. अगर यूके का ये सिस्टम आपको अपॉर्चुनिटी देता है, if you want to move from a general GMC registration to a specialist registration, so you have an alternate route, what is called as CSER, CESR. आप JRCPTB की साइट पे जाके आप उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं. I have gone through that process. It's a lengthy process जिसके अंदर आपको जो लोकल यहाँ के कैंडिडेट्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट आपको अपना सारा एविडेंस करिकुलम के मुताबिक प्रोवाइड करना होता है. That is cumbersome. That's not an easy task, but it is achievable. So while staying in the system, you can apply for CSER while staying outside the UK. I know people who have achieved it while staying in Saudi or while staying in different countries. But I think it gets a bit better once you have your local references and you know the system. So it is easy for you to prepare the paperwork. Again, once you are into the training, uske different route hai. Junior level pe MTI के through CPSP candidates को भेजते हैं जो कि training initiative है, medical training initiative. Again, it's a junior level post, but it is one of the way to enter into the system. आप 2 साल के यहाँ पे house job के करते हैं, and then gates are open for you. You can visa आपको 2 साल का मिलेगा, लेकिन if you are career oriented, people they pass their membership exam, whatever field they are in. They can pass MRCP, MRCGP, COG, or for the pediatric as well, or MRCS. And once they get that, then they can enter into core training, or they can get into the specialty post. CSER के बारे में अगर किसी को कोई भी information चाहिए, I'm more than happy to help, and I'm more than happy to guide how to go through it. जो लोग सिर्फ middle grade पे रहना चाहते हैं, again, उनके पास flexibility की option भी होती है. System does not want you to be overburdened. अगर training में भी आप हैं, तो आप वहाँ से flexible training program join कर सकते हैं, which means that you don't have to work 100%. If you want to spend time for your family, उसमें total training का period ज़्यादा हो जाएगा. Rather than 5 to 6 years, you might end up having 8 to 9 years of training. लेकिन आप अपने according to your circumstances, you can tailor it. So my suggestion would be, no matter what level you are working at, whether it is a junior level or you have already done your fellowship exam there in Pakistan, try to look for opportunities. You can आजकल तो social media के through और हमारी ये app जो है इसके through भी अगर आपको किसी किस्म की भी कोई help चाहिए, you can inquire. UK के लिए आपको language barrier भी is not a major issue. Although we are not, our spoken language is not as great as you know, because it's not our native language, but still I think it is much better than what the people are sharing their experiences, that you have to learn their language from scratch. Thank you very much, Dr. Sadia, for sharing us your experience. Next we have is Abdul Nasir, who is currently who is based in Germany. He has recently cleared the licensing exam for Germany, so he will guide us in detail about the pathways of licensing and working in Germany. Dr. Abdul Nasir. Sorry, it was mute, so can you start again? Sorry, I have unmuted you now. Okay. Assalamualaikum. I started my journey towards Germany in year 2018. So सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहले अपने language सीखनी है up to a certain level, which is B2 for someone who is opting for Germany. And language सीखने के लिए आप पाकिस्तान में काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं जो अगर आप अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं. एंड आफ्टर लर्निंग दैट लैंग्वेज फिर जर्मन में 16 स्टेट्स हैं जो कि सेंट्रलाइज नहीं हैं. दैट मींस इन वन वे और अदर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो आपको पहले आउट ऑफ 16 वन स्टेट चूज करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं मेनली जर्मन ट्रांसलेशन में इन आउट ऑफ 16 स्टेट किसी भी एक स्टेट में सेंड करने पड़ेंगे. एंड आफ्टर सम टाइम
you get a confirmation of your documents के documents receive हो गए हैं, and then उसके बाद एक और process आता है to get a letter which is called deficit bescheid, जिसका time period vary करता है every state, सब states में अलग है, it could be from 3 months to maybe 8 months, and इस letter के बाद basically you can apply for visa, and आप वीजा अप्लाई करते हैं, अगेन इसका भी टाइम वेरी करता है, अगर आप कराची से अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा के लिए डेट में भी इन 1 month मिल सकती है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इस्लामाबाद तो मे बी 3 months 6 months, तो ये टाइम पीरियड भी वेरी करता है, एंड वंस यू गेट योर वीजा एंड डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आपने अप्लाई किया है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम है बेसिकली 2 एग्जाम है जो कि मोस्टली जो भी एशियन लोग हैं यहाँ पे आते हैं जर्मनी में उनको लेने पड़ते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड फॉक्सप्राकप्रूफung, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एग्जाम है, जिसको क्लियर करने के बाद वी गेट अ लाइसेंस, टेम्पररी लाइसेंस टू वर्क here in Germany, and उसके बाद फिर there is another exam जिसको कैंटिनेस प्रूफung कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक लाइसेंस एग्जाम है. उसके बाद आपकी ऑफिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, मे बी इन मेडिसिन और सर्जरी, जिसमें भी आपने स्टार्ट करनी है. Having said that, it's sort of process में learning the level up to B2 and visa apply करने में and सारे documents confirmation आने में it takes time. It can take up to 1.5 to 2 years, and once you're in Germany, so you can take your exam, next exam, जिसे फॉक्सप्राकप्रूफung कहते हैं, maybe in 3 months, maybe 6 months, again depend करता है कि किस स्टेट में आपने अप्लाई किया है, and इसके क्लियर करने के बाद you can start working like for 2 years, and again जो नेक्स्ट एग्जाम है जो कि ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है, स्पेशलिटी ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट हो जाती है तो उसका टाइम फ्रेम बेसिकली 2 साल है, लेकिन इट अगेन वेरी करता है कि किस स्टेट में है आप. यू कैन टेक दिस एग्जाम विद इन 6 months to 2 years. तो ये बेसिकली जो कैंडिडेट है वो डिसाइड नहीं करता कि वो एग्जाम कितना जल्दी ले सकता है, तो बेसिकली ये स्टेट ही डिसाइड कर रहा होता है. तो नॉर्मली आई वुड से एक एवरेज टाइम जो लग जाता है वो 1 साल लग जाता है उस एग्जाम को पास करने के लिए. तो आफ्टर दैट आपकी जर्नी जो ट्रेनिंग की है ऑफिशियल स्टार्ट हो जाती है. हैविंग सेड दैट, इन कंपैरिजन टू यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, जो सेकंड एग्जाम आप पास कर लेते हैं, चांसेस जो हैं ट्रेनिंग के, जो आपकी डिजायर्ड ट्रेनिंग है वो मच हायर हैं, लेकिन उसके लिए अगेन जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दूसरे कंट्रीज से. तो वंस आप ये लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं एंड यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी ट्रेनिंग आप अपनी डिजायर्ड फील्ड में इजीली कर सकते हैं. Thank you. Thank you very much, Dr. Abdul Nasir, for sharing some practical experience. We have Irfan Majid Raja from Spain who has to attend another meeting. So I will just ask a quick question from him before he leaves, and then we will proceed with our session as per the schedule. So Irfan Majid Raja, many doctors are asking what are the residency options in Spain, and are the options are available for surgery candidates as well, because it is ये मतलब कहा जाता है कि सर्जरी की जो रेजिडेंसी है वो शायद ओवरसीज कैंडिडेट्स को इजीली नहीं मिलती. If you want. It's not true. Actually अभी लास्ट 5 years का स्पेन का जो ट्रेंड है वो ज़्यादातर फॉरेनर्स, लैटिन अमेरिकन जो हैं वो आते हैं. एक ही ऑब्स्टेकल है, अगर आप कतलोनिया के अलावा कहीं रह रहे हैं स्पेन बार में, तो सिर्फ स्पेनिश प्री रेक्विजिट है जो तकरीबन 1 साल लग जाता है B2 लेवल लेते हुए. मैंने पहले भी वही अर्ज किया कि हमने ये किया है कि हमने स्पेनिश डे 1 से स्टार्ट करवा रहे हैं. अभी जो भी हमारे कैंडिडेट पाकिस्तान से आएंगे, हम ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं पहले ही, उनको स्पेनिश नहीं आती. जो पाकिस्तान से आ रहे हैं दे आर मोस्ट वेलकम, हम उनको मुकम्मल गाइड करेंगे और करेंगे. सर्जरी एट हायर मोस्ट लेवल जो है, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्पेन में जो नया रेवोल्यूशन आया है ये इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी और इंटरनेशनल न्यूरोलॉजी फॉर एग्जांपल इज ये बोथ ट्रेंड, ये अभी यानी हाईएस्ट ट्रेंड है, हाई ट्रेंड है, इसका रुझान बढ़ रहा है इसका. तो ज्यादातर जो है इसमें लैटिन अमेरिकन जा रहे हैं, वो लोग जिन्होंने स्पेनिश ज़बान सीख ली है वो लोग जा रहे हैं. लोकल जो है इसमें कम है इस फील्ड्स में. तो ये ऐसा बड़ी नहीं है, मिथ ही है सिर्फ.
لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے 2 سے 3 سال لگ جاتے تھے پاکستان کا جو ڈگری ہے یا ڈپلوما ویلیڈیٹ کرواتے ہوئے, زبانیں کرتے ہوئے, اور امتحان جو ہے میر ریزڈا ایک ہی میر امتحان ہے, یہ یو ایس ایمری ٹائپ امتحان ہے, 6 گھنٹے کا لگاتار امتحان ہوتا ہے, ایک ہی دن, کوائٹ ٹف. لیکن اس میں جو جن کو میں جانتا ہوں, کم از کم ڈاکٹر برکات مصطفیٰ ہاشمی مثال کے طور پہ آپتھالمولوجی میں ہے, اینڈ وہ آپتھالمولوجی میں جانے کے لیے آپ کو 92-93% پلس مارکس لینے ہوتے ہیں. یس, وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, لیکن پڑھنا بہت پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آ کے اگر 1 سال زبان کا کیا, 7 اچھی اکیڈمی جوائن کر لی, یا خود بھی بندہ پڑھتا رہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا ڈفرینٹ ہے. میں نے اپنے وقتوں میں ہماری مطبع 12,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس پیے ہوئے تھے, میرا 3,441 نمبر تھا, میرا سرجری میں آرام سے نام آ گیا تھا. لیکن میں نے اس وقت کہہ رہے کہ ہاتھوں کا مسئلہ تھا میرا, تو میں نے اس لیے اس پین کی وجہ سے اوائڈ کیا اور میں میڈیسن سائڈ میں چلا گیا. لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپین میں ہی جاب کرنی ہے, ایک ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ ساراگوسا میں, جو کہ صوبہ اراگون ہے, وہاں پہ موجود ہیں, وہ یو کے سے یہاں پہ آئی ہیں, ہم ان کو مکمل ساتھ لے کے چل رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ شی ول سیل تھرو ان میٹر آف فیو ویکس. تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو سارٹ آؤٹ نہ کیا جا سکے. لینگویج مین بیریئر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی یورپین ایجوکیشن ہے تو وہ مسٹ ریمبر کہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں, بے شک آؤٹ آف بریکسٹ ناؤ انگلینڈ, تو اسٹل 2026 تک میرے خیال میں انگلینڈ پلان بلونیا جو ہے وہ بائی لا وہ فالو کر رہا ہے. تو پلان بلونیا کے تحت آپ نے موومنٹ کرنی ہے. اسپین اس کا اولین ممبرز میں سے ہے. دیر از نو پرابلم ایٹ آل ایکسیپٹ فار دا لینگویج. کتلونیا میں یہ ہم مار کھا جاتے ہیں کہ کتلان ساتھ سیکھنی پڑتی ہے, لیکن ہم چونکہ اسپینش اور کتلان خود سکھا رہے ہیں ابھی ڈے 1 سے, پراپر سرٹیفکیشن کے ساتھ پراپر اس کی تیاری کروا رہے ہیں, تو دیر وونٹ بی اینی پرابلم اف اینی اسٹوڈنٹ اور اینی کینڈیڈیٹ or any person, medical person want to come and get settled in Spain in terms of medical or allied sciences. Thank you very much, Irfan. So hopefully we will have your link on our website jahan pe students aap se directly contact kar sakenge, and then you will take them on for their journey in the Spain. I will hand over the mic to Shaista to proceed the session. بہت شکریہ ٹو آل دا پینلسٹ. آپ نے ہمیں اپنی آگاہی دی ہمارے ویورز کو. I'm sure کہ ہمارے ویورز جو ہیں they are feeling inspired and they are feeling hopeful. I think if they are then we are successful. اب لاسٹ میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ایپس یورپ کے ڈاکٹر عبد الرحمان شاہد, جو کہ جرمنی میں ہیں, وہ کچھ ہمیں کہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سب پارٹیسپینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی ڈاکٹر شائستہ آپ کا اور ڈاکٹر علی, آپ نے اس ایونٹ کو بڑے زبردست طریقے سے ارینج کیا, اور جو ڈاکٹر سعدیہ فرانس میں اور یو کے میں, اور عبدالنصیر بٹ بھائی جو جرمنی میں ہیں, ارشد بھائی اور عرفان بھائی, اور بھی باقی جو ہمارے پینلسٹ ہیں, تو ماشاءاللہ بہت اچھا. ہمارا جو فرسٹ مین مقصد تھا اس پروگرام کا وہ یہی تھا کہ ہمیں ایک نو ہاؤ ہو جائے کہ یورپ میں آپ نے اگر آنا ہے تو جاب کیسے کرنی ہے, اور پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا یورپ میں. تو میں اکثر ایک کومنٹ میں آ رہا ہے کہ نا جرمنی کا پروسیس کافی لینتھی ہے, تو اس پہ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم پہ لینگویج سیکھنی ہے. جیسے عرفان بھائی نے کہا کہ آپ 3 ویکس میں سیکھ سکتے ہیں لینگویج کے کچھ سٹیپس, 3 منتھس میں, تو اس کے بعد آپ جو سٹیپ 1 اور 2 ہے جرمنی کے اندر 1 ایئر کے اندر بھی آپ اچیو اب نہیں کر سکتے, خیر پہلے کر سکتے تھے, 2 ایئرس کے اندر آپ اچیو کر سکتے ہیں ساری چیز نا, اگر آپ سارے کام کو اگر تیزی کے ساتھ کریں, جو C1 لیول اگر آپ اس کو جلدی اچیو کر لیتے ہیں. تو ایک چیز میں اور یہاں پر کہنا چاہوں گا, سب اپنے جو ایپس یورپ کے ممبرز ہیں ہمارے, جو بھی آفیشیل ہیں اور جو آفیشیل بنیں گے, تو ہم نے یہ جو سارا کام ہے ایپس یورپ کا, یہ فرسٹ پلیٹ فارم ہے یورپ کے اندر جو کہ یہ سب چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. اور وی آر ناٹ اے کنسلٹنٹ فرم, ہم کوئی کنسلٹنٹ فرم نہیں ہے, ہم نان پروفٹ آرگنائزیشنل ایک آرگنائزیشن ہے, جرمنی میں ہم بیسڈ کرتے ہیں اور یورپ میں ہمارا ایک رجسٹریشن یعنی کہ ہم نے کروائی ہے.
تو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے یہاں پر کچھ یورپ میں کنسلٹنٹس بھی کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کو 10,000 یورو سے 15,000 یوروز چارج کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ سارا طریقہ بتاتے ہیں اور گارنٹی آپ سے وہ نہیں لیتے کہ ہم آپ کو یورپ میں جاب لے کے دیں گے. ایک طریقہ کار وہ ہے, یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں مطلب کہ تیزی کے ساتھ ساری ہیلپ چاہیے اور ہمیں فل یعنی کہ نا وہ مدد ملے, تو ایک طریقہ کار یہ بھی موجود ہے یورپ کے اندر. ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں میں بڑا ان کی عزت کرتا ہوں دل سے کہ سب نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا ہے اور وہ والنٹیئرلی طور پہ یہاں پر بیٹھ کے تو سب لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ جو ان سے وہ شیئر کر رہے ہیں, اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ادھر بیٹھے ہیں, تو ہمیں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز نے یہ شیئر کیا انہوں نے اپنے والنٹیئرلی ٹائم میں سے وقت نکالا ہے. تو ایک تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ اپریسیشن جو ان سی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے ہمارے فیوچر میں انشاءاللہ جو ہمارے پلان میں ہے, اور ہم پلان میں ہم نے یہ چیز ضرور رکھی ہوئی ہے کہ ہم 1 to 1 ہم ایچ کنٹری جیسے جرمنی ہے, ناروے ہے, ہم ڈیٹیلڈ پروگرام بھی انشاءاللہ ہم کریں گے 1 hour کا یا اس طریقے سے. تو اس میں پھر لوگوں کے جو بھی کویسچنز ہوں گے تو ہم ان کو پوری کوشش کریں گے کہ ان کے کا جواب ہم دیں اس کے اندر. تو اصل میں یو کے اور یو ایس اے کا سسٹم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یورپ کے اندر ابھی تک پاکستانیوں کی نیٹ ورکنگ کوئی اچھی نہیں تھی, تو ابھی ہم نے ایپس یورپ پلیٹ فارم سے ایک نیٹ ورکنگ سٹارٹ کی ہے. ادھر عربیوں کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے ادھر یورپ کے اندر, اسپیشلی جرمنی کے اندر, کہ وہ عربی جو ان سے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جرمنی میں آنا ہے, لینگویج کرنی ہے, پھر انہوں نے اس کے بعد کیسے ایک ٹیمپرری لائسنس اپلائی کرنا ہے, اس کے بعد کیسے انہوں نے جاب پہ جانا ہے. ان کا ٹائم نہیں ضائع ہوتا, اور میں نے خود اپنے 7 لوگوں کو کام کرتے دیکھا ہے ہاسپٹلز میں بھی, اور وہ بہت اچھی نیٹ ورکنگ ہے. تو ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں جو آلریڈی سیٹ ہو چکے ہیں یورپ کے اندر, وہ اپنے جونیئرز کی ہیلپ کریں, اور پھر وہ جو جونیئرز اوپر آئیں گے 2 سال کے بعد, وہ جو آنے والے جونیئرز ہیں ان کی ہیلپ کریں. تو ایک چین کا سسٹم ہم بنا دیں تاکہ ہم خود تو ماشاءاللہ جو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اس ویبینار میں ڈاکٹرز, وہ تو سیٹلڈ ہیں سارے, وہ تو اچھی پیز لے رہے ہیں, اچھے ان کی اچھی گزر رہی ہے, لیکن ہم یہ آنے والی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ بس میں یہی کہہ کے اختتام کروں گا کہ آپ سب لوگ ہمیں آفیشلی طور پہ ایپس یورپ کو جوائن کریں, تاکہ ہم جب کسی کانفرنس ہم کرتے ہیں یا ہم کوئی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم ایک پاور کے ساتھ یک زبان ہو کے ہم بات کر سکیں کہ وی ہیو لائک 1000 ممبرز اور اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تاکہ اگر ہم جرمنی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہاں کے ہیلتھ منسٹر سے یا ناروے کے ہیلتھ منسٹر سے یا کسی سے بھی جو ہمارے پرابلمس چھوٹے چھوٹے ہیں یہاں پر جو ریزیڈنسی کے اندر بھی, تو ہم وہ بھی حل کروا سکتے ہیں اپنے. تو اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں مطلب کہ میری طرف سے سب کو دوبارہ شکریہ, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں وہ اس ایک مقصد میں جو ان سے وہ کامیاب کرے جو بالکل والنٹیئرلی طور پہ ہم کر رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ویئرس, آپ کو پھر کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیں آفیشیلی جوائن کریں ایپس یورپ پہ, ہم اپنا لنک شیئر کریں گے تو آپ کو بہت اچھی ایڈوائس ملے گی. نہ صرف ایڈوائس ملے گی بلکہ آپ ہمیں اپنی اسپیسیفک پرابلمس بتا سکتے ہیں, اور آپ کو کسٹم میڈ اس کی رہنمائی ملے گی, کیونکہ ہمارے بہت سارے پروفیشنلز ہیں. ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ایز اے رجسٹرڈ آرگنائزیشن کہ جو ہمارے آفیشیل ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح سے چل سکتے ہیں. تو ہمارے اپنے جو یورپ کے لحاظ سے قاعدے قانون ہیں اس کے لیے بھی ہمارے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ ہمارے آفیشیل ممبرز ہوں, تاکہ ہم آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کر سکیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشف چوہان ہیں, ہمارے فاؤنڈنگ بورڈ ممبر ہیں, وہ ہم سے کچھ کہنا چاہیں گے. ڈاکٹر کاشف چوہان. جی السلام علیکم. میں آپ سے صرف کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. میرا نام ڈاکٹر کاشف چوہان ہے اور میں پیڈیاٹرک سرجن ہوں یو کے میں. سب سے پہلے تو میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عبد الرحمان شاہد, ان کا ویژن جو انہوں نے شروع میں ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا, اور جو جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو یو مسٹر پریزیڈنٹ, جو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے کیا ہے. اور دوسرا جو چیز جو میں نے یہ سیشن اٹینڈ کیا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس وقت میں کہاں پہ ہوں, لیکن میں نے آپ کا پورا سیشن اٹینڈ کیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کرکٹ میچ اس وقت کھیل رہا ہوں, کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر ہوں, اور میں نے آپ کا سارا سیشن سنا ہے. اٹس این امیزنگ سیشن. اور ڈاکٹر شائستہ اور
डॉक्टर अली जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है डॉक्टर अरशद के साथ, इरफान राजा के साथ और अपने दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू देम। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो काफ़ी इजाफा हुआ है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर अब्दुल रहमान शाहिद ने कहा है कि प्लीज़ बिकम द मेंबर ऑफ एप्स यूरोप, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन यूरोप। और आप डॉक्टर शाइस्ता से या डॉक्टर अली से कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी आप बोर्ड मेंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू इन एनी कंट्री ऑफ द यूरोप। तो हैट्स ऑफ टू यू, यू नो, वंस अगेन। So thank you very much for all of you and giving me the opportunity to be a part of this amazing association. Thank you. बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जैन हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर जैन इधर यूके में हैं। जी डॉक्टर जैन। डॉक्टर जैन आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने ये बेसिकली इंफॉर्मेशन लेनी थी अबाउट, क्योंकि मैंने एफसीपीएस एनेस्थीसिया में किया हुआ है ना, तो मैंने इंफॉर्मेशन लेनी थी अबाउट आयरलैंड या यूके में किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं या अदर कंट्रीज में। Sure, Zen. डॉक्टर अली रजा। Zen, anesthesia, FCPS anesthesia till last year recognized by GMC as a acceptable postgraduate qualification. Unfortunately, it is no more acceptable postgraduate qualification, which means for GMC licensing and to work in the UK, you need to do a licensing exam that can be PLAB or that can be a fellowship exam of Royal College of Anesthesia, as well as English language exam. So, and the third route is that medical teaching initiative, MTI seats, if they announce in anesthesia and then you apply, then the hospital can give you a certificate of sponsorship. On the basis of that, you can get GMC. So GMC registration is must, and the route to GMC registration is either PLAB or Royal College exam or a certificate or MTI, or College of Physician and Surgeon is also offering MTI schemes in collaboration with university hospitals here. So you have to choose one of the route to get GMC registration. Unfortunately, from the last year, it is no more an acceptable qualification for GMC registration. Thank you. शुक्रिया, but don't get disheartened. There's always a way. You just have to keep going. हम इस सेशन के जरिए ये आपको बताना चाह रहे हैं कि if we are sitting here, हम बिल्कुल आपकी तरह से पाकिस्तान से आए हैं. Anyone can do that. So you just have to start, and Apps Europe will be with you every step of the way. एक और question है Mr. तैमूर हमीद. आप पूछना चाहेंगे Mr. तैमूर हमीद? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। Can you hear me? जी बिल्कुल, Yes, हम ma'am. आपको सुन रहे हैं। Ma'am, first of all, I would like to thank you all the panelists to broaden our horizon regarding the job perspectives in the Europe. So I would like to say, because I am a foreign graduate, Pakistani foreign graduate, तो अभी जो है ना मुझे 2 साल हुए हैं वो यहाँ पे, मैंने मतलब 1.5 साल हुआ है मुझे हाउस जॉब कंप्लीट किए हुए। So since the post-graduation exam and the training is getting much more difficult nowadays, जिसमें आपने सबसे पहले एक पाकिस्तान में जो है ना वो करनी है 2 years की गवर्नमेंट सर्विस करनी है, देन यू विल बी एनरोल्ड फॉर द गवर्नमेंट ग्रेजुएट। और जो बेचारे के पास गवर्नमेंट सर्विस नहीं है वो फिर एफसीपीएस एग्जाम पास होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकता। सो आई वुड लाइक टू नो, माय वाइफ इज इन नॉर्वे एंड शी इज आल्सो अ डॉक्टर, सो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर मी to apply for the residency or for license. Yeah, we can hear you. Sorry. We will go to Dr. Ashar. कोई disturbance हो रही है, I think. No, sorry.
we have got your question. Your wife is in the Norway. Okay. You have done MBBS and completed your house job, and you want to know the pathway Yes, to yes, work in the Norway. definitely. We have Dr. Ashar Sultan, who is currently working in the Norway. So, Dr. Ashar Sultan. जी अस्सलाम वालेकुम जी यू आर वेलकम टू वर्क इन नॉर्वे। तो जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था, यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर है वो लैंग्वेज का होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। 1 ईयर का नॉर्वेजियन लैंग्वेज कोर्स होता है। उसके बाद नॉर्वेजियन मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है। इन चीज़ों के बाद अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। फिर अगर लाइसेंस मिल जाते हैं फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी। ये सारा 2 से 3 साल इसमें प्रोसेस में लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन बहुत बेटर हो जाती हैं। अगर आपकी वाइफ नॉर्वेजियन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल ना। चाहे आप नॉर्वेजियन, आप खुद भी नॉर्वेजियन है तो भी सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं। Thank you very much, Sultan. हाँ, लेकिन अगर आपने यूएस में स्टेप 2 किया हुआ है या प्लैब किया हुआ है, फिर आपको लाइसेंस थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। लैंग्वेज जो आप पास कर लेते हैं जहाँ नॉर्वे में मिल जाती है। So, as per my understanding, Dr. Ashar Sultan, that Taimur has to clear the language exam in any case, and other than this, there are certain options in the form of PLAB or STEPS or the Norwegian exams, and we can discuss them in a detailed session in future with you. Yeah, thank you. ठीक है, महरीन रियाज कुछ पूछना चाह रही हैं। महरीन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है आप लोगों का और जितने भी स्पीकर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर शाइस्ता यूके के लिए, मुझे उनसे सिर्फ ये पूछना है कि अगर पाकिस्तान में किसी ने FCPS कर लिया हो, उसके बाद वो जब अप्लाई करते हैं फॉर ट्रेनिंग पोस्ट इन यूके, like she said middle grade level, तो वो जो level है, is it going to be core training or is it somewhere in the ST training? तो अगर वो ST के किस level पे हम apply करेंगे, क्योंकि jobs जब आती हैं we are not sure कि हमने किस level पे join करना है, and what if कि अगर वो training pathway को rejoin करना चाह रहे तो would we be joining as ST1, 2 or 3? Or I mean, I don't know where should I place myself, so could you please help me in that regard? Thank you. Dr. Ali Raza. Mehreen, after completing the FCPS, you are usually आप experienced होते हो, और जो trust hospital है वो आपको suitability देखता है कि आप ST किस level के ऊपर हो. So at least it should be ST2 rather than the core medical training. It should be specialty training. जहाँ तक ट्रेनिंग पाथवे के पे एंटर होने की बात है, दैट विल बी द सेम इफ यू व्हाट यू कैन डू, आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करोगे रेदर देन द IMT ट्रेनिंग, जो और आप IMT ट्रेनिंग का एक कॉम्पिटेंसी अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट है विच यू कैन प्रेजेंट, वो आप अपने लोकल सुपरवाइजर जो पाकिस्तान में उससे साइन करवाते हो एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. सो वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर देगा. देन यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, टू हैव एनफ स्कोर कि आपको रेजिडेंसी मिल जाए. तो जो आपका सवाल था उसका आंसर ये है कि आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लेवल पे करोगे. अगर आप ट्रेनिंग होगी तो आपकी ST1 के ऊपर स्टार्ट होगी. अगर आप नॉन ट्रेनिंग पोजीशन के ऊपर करते हो तो जो हॉस्पिटल है वो डिसाइड करेगा कि आपको स्टार्ट में कुछ अर्सा SHO रखना है या आपको स्पेशलिटी रजिस्ट्रार देना है, तो किस लेवल के ऊपर जाके आपकी सीनियरिटी जो है वो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी वो डिसाइड करते हैं. Most of the people start with a non-training job and then they build their portfolio locally and then they apply for a training job. Thank you. शुक्रिया. जुनैद खान है हमारे साथ. जुनैद, आप कुछ पूछना चाहेंगे? Let me make sure we can hear you. Okay, go ahead, Junaid Khan. Yes, madam. Thank you, madam. मेरा question डॉक्टर इरफान से from Spain कि अभी तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहा हूँ FCPS की. अगर वो हम कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर मतलब क्लियरिंग दैट एग्जाम, व्हाट इज द पाथवे फॉर दैट इफ वी कैन want to come there as a consultant? Because for training this is a very long pathway, as I listened in this, because you have to learn language for 1 year or so, then house job and then so much other thing, then it takes 7 to 8 years over there. So it is very lengthy process. After doing
training in Pakistan, what is the pathway for that if you want to go there? Thank you. जुनेद साहब, आप डॉक्टर इरफान थे हमारे साथ स्पेन से मौजूद, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी स्पेन के बारे में, तो अब वो उन्हें किसी और मीटिंग के लिए जाना पड़ गया है, लेकिन हम स्पेन का प्रोग्राम अलहदा से रखेंगे और हम इन सारे सवालात का जवाब देंगे। उन्होंने 2 दफ़ा इस बारे में कहा था, अगर आप शायद रिकॉर्डिंग सुने बाद में तो आपको आपकी मतलूबा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डॉक्टर अलीजा, क्या ख्याल है, कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लें हम चैट से या फेसबुक लाइव से बिफोर वी क्लोज? One thing which I want to address to all the doctors in Pakistan who are listening to us, जब आप यूके या यूएस का जर्नी भी स्टार्ट करते हो तो उसके ऊपर भी 2 से 3 साल लग जाते हैं। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन यू लिसन कि आप किसी भी कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 साल लग रहे हैं। अगर आप एमआरसीपी का रूट देखें तो उसमें एटलीस्ट 3 years लगते हैं इफ यू आर क्लियरिंग एवरी एग्जाम इन फर्स्ट टाइम एंड देन लैंग्वेज एग्जाम एंड देन जीएमसी रजिस्ट्रेशन। सो जो टाइम स्केल है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दैट इज सेम। उन वहाँ पे भी जाने में जो 2 से 3 साल का जो सारा लगता है, लैंग्वेज करने का जो 1 साल का कोर्स है, हाउ एप्स यूरोप विल फैसिलिटेट के जो पहले कंसल्टेंट्स बहुत हैवी फीस लेके आप उन कोर्सेज के बारे में बताते हैं, वी विल ट्राई कि हम आपको ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज बताएं जो आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर लें, एंड देन यू कैन सो यू कैन सेव योर टाइम। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि यूरोप के अंदर 2 से 3 साल लैंग्वेज और इन सारी चीज़ों में लगते हैं। सेम इज आई नो मैनी पीपल जिनका आइल्स यूके आने के लिए, जिनका आइल्स ओईटी जो है वो भी स्टक हुआ एंड इट टुक देम अ ईयर टू क्लियर द इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम। सो जस्ट डोंट गेट वरी अबाउट दिस, इट इज जस्ट टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस एंड सी लुक फॉर various markets for the health professionals in the world. और मैं भी अपने तजर्बे से कहना चाहूँगी कि हमारा होता है कि हमने पाकिस्तान में ये किया, इतने साल लगाए हैं, अब हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं तो हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। हमें बाज़ दफ़ा हम फील करते हैं कि हम पीछे चले जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैं फाउंडेशन ट्रेनिंग करके आई थी पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ आके मैंने दोबारा से फाउंडेशन ट्रेनिंग की फॉर अ ईयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट कम्फर्टेबल। मैं उस चीज़ में से गुजरी, हालांकि मेरी हो चुकी थी फाउंडेशन ट्रेनिंग, बट मुझे ये था कि मुझे यहाँ की बेसिक्स पता चलेंगी, मुझे यहाँ का सिस्टम पता चलेगा, मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो यहाँ पे फाउंडेशन ट्रेनिंग लेवल पे मिलती है, और मेरी बाकी की ज़िंदगी आसान होगी। तो ये भी एक चीज़ ज़हन में रखा करें कि यूँ महसूस हो सकता है कि मुझे एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन वो असल में अच्छा होता है आपके अगले करियर के लिए, आपकी आसानी के लिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ मुख्तलिफ होती हैं जो आपको तभी पता चलती हैं जब आप सिस्टम में बेसिक से स्टार्ट करके करें। तो इस चीज़ को भी सामने रखिएगा, और कोई भी ट्रेनिंग ज़ाया नहीं जाती आपकी, वो नॉलेज हमेशा आपके साथ रहता है जैसे भी आप करें। Yes, I want to support this view by Dr. Shaista कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो यहाँ पे जब आप फॉरेन कंट्रीज में आते हो तो आप बहुत बॉदर नहीं करते कि आप कंसल्टेंट पोजीशन पे काम करें, आप मिडिल ग्रेड लेवल पे काम करें, कि आप जूनियर डॉक्टर के लेवल के ऊपर काम करें। जनरली द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द डॉक्टर्स इज गुड इन दीज कंट्रीज। सो जो हार्ड वर्क है, जो हर्डल्स हैं, जो सारी एक डार्क पैच है, वो इनकी लाइसेंसिंग, इंग्लिश इनकी लैंग्वेज एग्जाम्स करना है। वंस यू आर डन विद दीज, तो आप जिस भी लेवल के ऊपर उनके हेल्थ सेटअप को ज्वाइन करते हो, you have a good quality of life. Now we will conclude the session. So over to Shaista Miraj. थैंक यू व्यूअर्स, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। ये प्रोग्राम आपके लिए था और आपकी वजह से ही ये हमने कंडक्ट किया था, एंड यू आर द मेन पीपल फॉर बिहाइंड दिस सेशन। तो हमें अच्छा लगा, हमने आपके सारे क्वेश्चंस देखे हैं। हमें इंतज़ार रहेगा कि आप हमारे ऑफिशियल मेंबर्स बने ताकि हम चीज़ों को आगे चलाएं, आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई करें, and we will guide you. We have a lot of medical professionals in various grades, and I want to say we're not only doctors, nurses, pharmacists, physiotherapists, paramedics, ophthalmology related, chiropractor, anything related to health industry. Apps Europe is a platform for them. So if you have any friends or family members who are not non-doctors but related to health industry, Apps Europe is for you. और हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम करेंगे, आपके क्वेश्चंस की बेसिस पे हम मजीद सेशंस तरतीब देंगे। और डॉक्टर अलीजा कुछ कहना चाह रहे हैं?
Yes, there is a question कि जो लोग पाकिस्तान में हैं जो यूरोप में नहीं है, can they become member of apps Europe? So definitely they can become official members of apps Europe, and then they will be subscribed to the newsletters and the other things we are planning to do we update them regularly about the projects of apps Europe and how they can participate. Another thing is that कि हम हर जो country है यूरोप का उसका individual program आगे plan करने जा रहे हैं. So if you have any questions, just follow our Facebook page on the name with the name of Apps Europe, and we will definitely post about that. जो भी हम programs कर रहे हैं, तो आप keep in touch with us. आगे हम एक कंट्री जो यूरोप का है उसको पिक करके उसके बारे में डिटेल प्रोग्राम करेंगे, so that we can specifically guide you. We will also post guidelines and links on our website. तो आप हमारी जो website appseurope.org है उसको आप frequently visit करें. So everything will be there for you people to explore a beautiful European world for you. Thank you. बहुत शुक्रिया to all the panelists and all the viewers. हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. Okay, अल्लाह हाफिज. Hafiz. अल्लाह हाफिज.